चैप्टर नंबर 21 का ये क्वेश्चन है। मॉरिशस होटल कंपनी MHC होटल कंपनी है, ठीक है, अकोमोडेशन बिजनेस होगा डेफिनेटली। MHC operates in the very competitive hotel and restaurant market in Mauritius. Mauritius देखा है, फिट जगह है वैसे, खूबसूरत। MHC operates in the very competitive hotel and restaurant market in Mauritius. The marketing manager forecasts sales for the next 12 months in January of each year. Sorry, वापस। MHC operates in the very competitive hotel and restaurant market in Mauritius. The marketing manager forecasts sales for the next 12 months in January of each year. ठीक है, हर साल की जो सेल्स है वो हम फोरकास्ट करते हैं जनवरी में। सही है, 12 महीने की सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं हम। These forecasts are used to plan workforce requirements, cash flow requirements and inventory levels. अच्छा चलो एक बात बताओ कि जो ये वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स, मतलब सेल्स फोरकास्टिंग का वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट से कोई कनेक्शन है क्या? मतलब सेल्स फोरकास्टिंग और वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट की कोई कनेक्शन बनता है? बिल्कुल, गुड। क्योंकि जितना ज्यादा सेल्स हमारी फोरकास्टेड होंगी, वेरी नाइस, जितनी ज्यादा हम सेल्स फोरकास्ट कर रहे होंगे, जिस तरह की हमें सेल्स का ग्राफ नजर आ रहा होगा, then we will have to make sure that we do have the sufficient workforce to deal with that increasing sales, because I might need a larger number of employees, right? और अगर सेल्स फोरकास्टिंग गुड का ग्राफ कम होता हुआ नजर आ रहा है, सीजन का ऑफ का कुछ सीन नजर आ रहा है, तो शायद फिर हमें कम भी करना पड़ेंगे। वेरी नाइस। इसी तरह क्या कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती हैं? बिल्कुल, बिकॉज अगर आपका कोई पीक सीजन होता है तो उसमें आपके पास ज्यादा कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड होते हैं, जबकि अगर आपके पास लाइक से कोई ऑफ सीजन टाइप सीन होता है, जब 12 महीनों में कोई ना कोई 1-2 महीना 3 महीना होटलिंग इंडस्ट्री का ऑफ सीजन होगा, तो उसकी भी फिर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कैश फ्लो की, क्योंकि अगर ऑफ सीजन होता है तो उसमें आपको ओवरहेड्स तो पे करने होते हैं, तो उसके लिए शायद फिर आपको ज्यादा कैश फ्लोज चाहिए होंगे ना, टू कवर अप फॉर द ओवरहेड्स इवन इन द ऑफ सीजन। दैट्स अ सीन। सही है। और द मार्केटिंग मैनेजर फोरकास्ट सेल्स फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स इन जनवरी ऑफ ईच ईयर. These forecasts are used to plan workforce requirements, cash flow requirement and inventory levels. And definitely inventory levels are also connected with the sales forecast, because if I'm forecasting that the sales will increase in the future, then probably I'll have to make sure that I coordinate with my supplier to have higher inventory levels, because अगर sales बढ़ रही हैं और मैं inventory को फिर उसके in line नहीं बढ़ाऊंगा, तो definitely फिर मैं वो demand को कैसे fulfill करूंगा, and that can be a problem. So that's why I'll have to make sure that I match my inventory level with my sales forecast. She uses quantitative analysis of past sales data and consults a panel of lecturers from local universities who are experts in economics and hotel management. ये कौन सी, कोई बता सकता है मुझे? Like panel of lecturers from local universities who are experts in economics and hotel management. What method is this? That's good. Very nice. Delphi method. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से हम जब पूछ रहे होते हैं, डेल्फी। डेल्फी सही है, तो इनसे हम ओपिनियंस लेते हैं। इन 2021 the company increased its promotional expenditure with the objective of increasing the number of foreign tourists using its hotels and local residents using its restaurants. सही है, promotional spending अभी हमने बढ़ाई है with the objective of increasing number of foreign tourists using its hotels and local residents using its restaurants. Magazine advertising was paid for in exclusive foreign publications. Magazine advertising was paid for in exclusive foreign publications. सही है भाई, full heavy आ रहा है. A social media campaign was used to promote the restaurants to local restaurants. ठीक है भाई, मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट्स किया है, which is magazine is I think is a very expensive method of promotion, and that they have done this because why would they have done this? Because they know that कि कुछ थोड़ा सा शशका देंगे तो शायद फिर हमारे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट आना चाहेंगे, फॉरेन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं. The sales results for 2020
before the increased promotional spending, the sales result for 2020 before the increased promotional spending and 2021 after both campaigns ended are shown in table 21.7. ठीक है, यानी कि हमें 2020 की भी सेल्स गिवन है और 2021 की भी सेल्स गिवन है, और इसलिए गिवन है क्योंकि वी विल हैव टू कंपेयर दैट वेदर द प्रमोशनल स्पेंडिंग वाज इफेक्टिवली डन, whether the spending on promotional campaign was effective, did it actually give me the results, the returns, क्या मेरी सेल्स बढ़ी उस प्रमोशन को पे पैसे लगाने के बाद, ये हम कंपेयर करते होंगे ना। हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई कहीं किसी एड पे किसी प्रमोशनल कैंपेन्स में पैसे लगाता हूँ, so that should be effective. And I'll definitely compare my past sales data with my new sales data. If I have spent, let's say, certain amount, then I would expect that मेरी डिमांड भी बढ़नी चाहिए है, कोई भी एक्सपेक्ट करेगा शायद फिर। सही है। एंड ऑल फिगर्स इन मिलियन डॉलर्स, जिसमें हमारे पास दी हुई है 2020 और 2021 की प्रमोशनल स्पेंडिंग, ठीक है, और सेल्स। इसी तरह पे 2021 की प्रमोशनल स्पेंडिंग दी हुई है और सेल्स फॉर बोथ द होटल एंड द रेस्टोरेंट। यानी कि अगर मैं होटल देखता हूँ तो in 2020 we spent 1.5 million dollars on promotional spending and our sales were 50 million dollars, but in 2021 we have doubled our promotional spending and probably this is because वो हमने जो मैगजीन में ऐड दिया है, और सेल्स भी बढ़ी है मेरी, बट डबल नहीं हो गई। इससे promotional spending is actually doubled for this hotels market, which is a प्रोपोर्शनेटली अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने प्रमोशनल स्पेंडिंग डबल की है तो फिर मेरी सेल्स तो इतनी ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में डेफिनेटली नहीं बढ़ी, जितना आई थिंक 50 से डबल तो 100 होता है ना। और रेस्टोरेंट्स में वी स्पेंट वन नहीं 0.8 मिलियन डॉलर्स एंड द सेल्स वर 10 मिलियन डॉलर्स एट द टाइम एंड वी इंक्रीज दिस टू 1 मिलियन डॉलर्स एंड द सेल्स एक्चुअली आई थिंक expedited a lot. A little change in promotional spending led to a greater change in demand, I believe. वो तो हम अभी परसेंटेज टर्म्स में भी निकाल के देखेंगे, लेकिन नंबर देख के ही समझ आ रहा है। तो याद ये कॉन्सेप्ट समझ, कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात होगी, कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात चल रही है, मेनली प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ, हाउ मेनी इलास्टिसिटीज डू वी हैव इन आवर सिलेबस, वी हैव 3 elasticities ना, price elasticity of demand, income elasticity of demand and promotional elasticity of demand. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसीजन लेना है, इफ आई वांट टू डिसाइड दैट वेदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, देन आई विल टेक द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेयर एज अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के टाइप के बारे में पता करना है, दैट वेदर आई डील इन नॉर्मल गुड, luxury good or inferior good, if I want to identify uh, the type of what the type of product that I deal in, then I need to calculate कौन सी वाली, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही है, क्रॉस नहीं है सिलेबस में, ठीक है। एक सेकंड, एक हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड द थर्ड वन इज promotional elasticity of demand. And why would I want to calculate, or why would a business want to calculate promotional elasticity of demand? Because uh, before deciding that whether to increase promotional or decrease the promotional spending, I need to know that whether my product is promotionally elastic or whether my product is promotionally inelastic. What will a business want? Like if they're spending on promotion, question samajhna, if an organization is investing on or spending on promotion, what will they expect? What should their product be, elastic or inelastic? They would want it to be promotionally elastic, because if it's promotionally elastic, then only the business will want to spend on promotional campaigns, वरना तो फिर वो बोलेंगे कि इससे तो बहुत बेहतर है कि आप प्रमोशन में पैसे ना लगाओ। सही है, प्राइस नहीं, प्रमोशन सही है। Calculate the promotional elasticities of demand from the data above for both the hotels and the restaurants. Calculate the promotional elasticities of demand from the data above for both the hotels and the restaurants. Can we calculate promotional elasticities of demand? Easy. Promotional
percentage change in quantity demanded upon percentage change in promotional spending, right? फॉर्मूला तो हमें याद होगा, मुझे याद है ना? फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई. And we have to calculate promotional elasticity of demand for hotels, and we have to calculate the promotional elasticity of demand for the restaurants. But for the hotels, we will have to first calculate the percentage change in demand. Percentage change in demand and percentage change in promotional spending. क्या आएगी बताओ? परसेंटेज चेंज निकालने आता है, क्या फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज का? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, अब तो याद है यार, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? सो क्या हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, बताएं? कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन sales for hotels? What will be the percentage change in demand? Because if I talk about sales, and the new value is 60 million and the old value is 50 million, so it will be 60 million minus 50 million divided by 50 million multiplied by 50% multiplied by 100, so that will be 20%. The demand increased by 20%, and the promotional elasticity नहीं, sorry, promotional spending जो है वो हमारी promotional spending कितना परसेंट चेंज हुई थी भाई हमारी? 1.5 से हमने डबल कर दिया ना, 3 मिलियन पे लेकर चले गए. बहुत जज्बाती हो गए थे हम शायद. डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100. न्यू वैल्यू माइनस, सॉरी, न्यू वैल्यू minus old value divided by old value multiplied by 100. So this will be 100% shit. यानी कि the promotional spending increased by 100%, but the demand only responded by an increase of 20%, which means that this will be percentage change in quantity demanded, which is 20%, upon percentage change in promotional spending, which is 100%. So my answer will be 0.2. And we know that this is a promotionally good inelastic product. क्यों promotionally inelastic क्यों है? क्योंकि clearly लेस देन 1 भी याद रख सकते हो, यू भी याद रख सकते हो कि भाई हमने 100% से अपनी प्रोमोशनल स्पेंडिंग बढ़ाई है और सिर्फ 20% डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया है. लाइक हम लोग ज्यादा भी प्रोमोशन पे इन्वेस्ट स्पेंड कर रहे हैं तो भी हमारी डिमांड ने इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया है, विच मीन्स दैट इसका मतलब ये था कि क्या कहेंगे इसको हम, कि क्या प्रोमोशनल स्पेंडिंग करने का या प्रोमोशनल पे पैसा लगाने का फैसला वाज द राइट डिसीजन और द रॉन्ग डिसीजन? व्हाट डू यू थिंक? Was it a right or a wrong decision? It was not the right decision. It should have been less. थोड़ा सा मुनासिब होना चाहिए था. लेकिन क्या और भी कोई वजह हो सकती है कि डिमांड ना बढ़ी हो? Can there be some other reason? Maybe the spending was right, but the तरीका was not right. Maybe नहीं. Maybe यार इकोनॉमिक कंडीशंस का प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही है. वैसे दूसरी साइड पे तो बढ़ रही है, ऐसा नहीं है. लेकिन मे बी द मीडिया मैगजीन वाला तरीका वाज नॉट राइट. ये भी तो मेरे को ऐसा हो सकता है ना कि आपने जो मीडिया डिसाइड किया, मे बी नया कोई कंपटीशन आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है. वेरी नाइस, सही है. तो होटल्स, ये तो होटल्स की बात हो रही है. होटल्स के लिए तो हम इंटरनेशनल कस्टमर्स बुला रहे थे ना. मेरे ख्याल से द मीडिया माइट नॉट बी डन प्रॉपरली. maybe the placement might not be properly designed, or maybe the campaign itself was not well. The advertisement जो post हुआ होगा मैगजीन में वो इतना अच्छा डिजाइन ना हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि ये हुआ होगा. हो सकता है कि वाकई promotionally inelastic हो. I'm not saying, but it is a possibility that the spending done may not have been done effectively, and that's why the demand did not much increase. That can be one of the reasons, I think. But हमें मैं सिर्फ डिस्कशन सोचना सिखा रहा हूँ. ये हमें दोनों साइड्स आनी चाहिए. हमें ये भी समझ आना चाहिए कि it's a promotionally inelastic product, and for that business I would generally suggest that you should not invest more on the promotional campaigns, and as it's not clearly giving you the results. But at the same time, I'll also say that you have to also assess that how effective were
those promotional campaigns designed, because if they were not effectively designed, then probably फिर तो फिर क्या फायदा. समझ आए? टाइप ऑफ बिजनेस तो हमारे पास है भी होटल, वैसे डिपेंड्स ऑन दैट टू. यस, सही है. गुड, यस, वेरी नाइस. और बाकी इसके अलावा रेस्टोरेंट्स की बताएं मुझे. रेस्टोरेंट्स, फॉर द रेस्टोरेंट्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड. परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है? निकल जाएगा, नहीं तो आसान हो गया. What is the demand for restaurant? 15 minus 10 upon 10 multiplied by 100. So this will be 50% upon percentage change in promotional spending. It is divided by कितना आएगा? 25. 25 आएगा. 25%, no? So answer is 2. And this will, as the answer is more than 1, so this means that this is, the restaurant is basically promotionally elastic. And generally I would recommend this business to invest and spend more on promotional campaigns, because the promotional campaigns actually gives you the results, which is nice. And और लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी और रीजन की वजह से डिमांड बढ़ गई हो, या मे बी हो सकता है. समझ आ गया? कॉपी कर लो. 1. तो 2 क्या कह रहे हैं? On the basis of these results, on the basis of these results, do you think the company should change how it spends its promotional budget next year? Explain your answer. On the basis of these results, do you think the company should change how it spends its promotional budget next year? Explain your answer. So this is for 8-mark question, and for 8 mark अब हमें क्या करना होता है? 8 mark का क्या स्ट्रक्चर होता है? Introduction and 2 points. So what do we define? Do you think that this should change the promotional budget? What do you feel? अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्वेश्चन 2 का, तो इंट्रो में क्या डिफाइन करूंगा मैं? What should I define in introduction? I should define promotional elasticity of demand, right? I'll define proper promotional elasticity of demand. This is when this is the percentage change in quantity demanded with a given change in promotional spending. And this can be promotionally elastic or promotionally inelastic demand. Proper definition लिखेंगे. हाँ बिल्कुल. और इसमें हम एक पैराग्राफ क्लियरली होटल्स का बनाएंगे. वेरी नाइस. और एक पैराग्राफ में आई थिंक हमें फिर रेस्टोरेंट्स पे बात कर लेनी चाहिए है. और इसमें हम होटल्स में क्या लिखेंगे? दैट as it can be seen that the promotional elasticity for hotels is कितना? As it, सिर्फ मैं pointers बनवाऊंगा, लेकिन सुन लो अब एक second. As it can be seen that the promotional elasticity for hotels is how much? 0.2. 0.2. I need to first state whatever I'm trying to write, and then I'll have to first explain कि इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब क्या होता है? This means that when the promotional spending increased by 100%, the demand only increased by 20%. And this shows that the demand is not much responsive to the change in
To the change in what? The demand is not much responsive to the change in promotional spending. And since it's not very productive, promotional spendings can be reduced. Promotional spendings can be reduced, है ना? Or the effectiveness of the campaign should also be assessed before deciding to cut down the promotional budget. सिर्फ मैं पॉइंटर्स बना रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है यार अब, है ना? पैराग्राफ बना सकते हो फिर, आई एम श्योर लिखेंगे ना? लाइक पहले हमने पॉइंट स्टेट किया कि यार ये इलास्टिसिटी है क्या, फिर मैंने उसका मतलब समझाया कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस 100% एंड लाइक व्हाट डू आई मीन बाय दिस 0.2। पहले मैं मतलब समझाऊंगा 0.2 का कि यार हमने जब प्रमोशनल स्पेंडिंग 100% से बढ़ाई, द डिमांड इज जस्ट इंक्रीजिंग बाय 20%, एंड व्हिच शोज that the demand is not much responsive to the change in promotional spending. And I think that this increase in promotional spending was not very effective, and they should actually cut down on their promotional budget in the next upcoming year. That is what the question is asking. You have to make sure that you stay focused on the question also. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमें अगले साल प्रमोशनल बजट में कोई चेंज लाना चाहिए है, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई राइट that I think that promotional budget should be cut down for the hotels because it's not very promotionally elastic, and it would be recommended कि आप जो है वो थोड़ा सा प्रमोशन के ऊपर बजट अब आप इस पे कट डाउन कर लो, या तो पहले आप इसकी इफेक्टिवनेस चेक ले लो कि यार क्या ये कैंपेन इफेक्टिवली डिजाइंड भी था या नहीं था, सही। लेकिन जनरली आई वुड रेकमेंड टू कट डाउन ऑन द प्रमोशनल बजट। गेटिंग द पॉइंट? और सेकंड पैराग्राफ क्या होगा हमारा? Second paragraph should be about para 2 should be about restaurants. Should be about restaurants. Paragraph 2. Restaurant के लिए क्या लिखें भाई? First we will state that the promotional elasticity of demand for the restaurant as calculated in the above part is 2, which means state करने के बाद बताएंगे इसका मतलब, which means that the demand increased by 50%, but the promotional spending was just increased by 25%. This means the demand is what? Promotionally elastic or inelastic? 2% नहीं लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2। ये आंसर में देखो मैंने 2% नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, सही है। परसेंटेज आंसर में नहीं आता। Foreigners are willing to come in the restaurant. How? नहीं, हम लोग लोकल रेजिडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए, तो हम फॉरेन कस्टमर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द होटल्स, एंड फॉर द रेस्टोरेंट वी आर ट्राइंग टू टारगेट आवर लोकल रेजिडेंट्स। ये लिखा हुआ है देखो केस में। समझ आया? तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा भाई? दिस मीन्स दैट द डिमांड इज प्रमोशनली इलास्टिक ना, a slight increase in demand, led to
A slight increase in promotional spending, sorry, led to what? Led to a significant increase in demand. This increase in spending is justified as the new local, कौन आए होंगे? लोकल रेजिडेंट्स को हमने टारगेट किया था ना. As the new local residents seem to be successfully targeted, seems to be successfully targeted ना, अच्छे से टारगेट किया था तभी तो आगे ना वो इतने सारा रश लग गया हमारे पास. और अगले साल के लिए क्या करना चाहिए? प्रमोशनल बजट should we increase it or decrease it? What do you think? Should we increase the promotional budget for the restaurant, or we should not increase the promotional budget for the restaurant? We can plan to increase. The budget can be good. The budget can be increased in the upcoming year based on this elasticity. समझ आ रहा है? अभी तो सिर्फ उसने ये पूछा है क्वेश्चन में कि क्या हमें प्रमोशनल बजट बढ़वाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए. जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर कर रहा हूँ. और ये इतना बेसिक आंसर है कि बहुत एग्जाम में इतना ज्यादा बेसिक भी नहीं होगा. जाहिर है ये तो किसी बड़े आंसर के साथ मिलके भी आ सकता है. और वो डेफिनेटली ओवरऑल पूछ सकता है कि हाउ कैन द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प टू मेक मार्केटिंग डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह से डायरेक्ट भी पूछ सकता है. इतना इतना डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि बताओ प्रमोशनल बजट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए. ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रमोशनल इलास्टिसिटी देखने के बाद हम उसके फिर बजट्स के ऊपर वर्किंग करते होंगे. इतना क्लियरली इसलिए पूछ रहे क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है. एग्जाम में हमें खुद ही पता होना चाहिए कि भाई प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्चुअली डिसाइड ऑन देयर प्रमोशनल बजट्स. सही है. तो वो इसकी लर्निंग मेन ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन लिख रहे हो. मेन आपका ये है कि you should know that how promotional budgets and promotional elasticity is connected. Getting my point? ये हट गया, सॉरी. इज इट क्लियर? समझ आया? क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अब आप लोग को पूरा सही है. ये पॉइंटर्स कॉपी कर लो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. प्लीज ऐसे नहीं छोड़ देना, अटेम्प्ट करना फिर. सही है.